As I have discussed about the method overloading. Okay, so like class animal, then eat, then dog bark. Okay, so overriding that thing I have covered. Then I go for the that multiple inheritance. Okay, so multiple inheritance is what one class derive the set of attribute from more than one parent class. Okay, one class derive its set of attribute from more than one parent class. I show the program here. So if you check here, the class animal speak, dog is extends from animal, dog child is extends from dog. Okay, it is a multi level माने dog टा extends है animal ठारू पुनी dog child extends है dog रू. Okay, like parent, grandparent, parent, then here it is a child. तो आमे lastly कौन कले ना ए child class रा object बनेले से object थ्रू रे आमे एठी bark function को call कले d dot bark. Okay, d dot bark means it is calling this function. Then d dot speak function, which is a function of this animal, and d dot eat function. बुझिएला समय सर जो देखा है डी डॉट सर जो लिखा है डी डॉट बार्क डी डॉट स्पीक सर ମାନେ ସାର୍ ସିକ୍वेନ୍ସ ଏପଟ ସେପଟ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ चलो तमे जो कॉलिंग ऑर्डर जहाँ रखिबो तमरो इनफॉरमेशन टा सेही वे रे शो करियो. ओके सर ସବୁବେଳେ ସାର୍ ଚାଇल्ड କ୍ଲାସ ରେ ଅବଜେକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ ହବ हाँ चाइल्ड क्लास तमे जो माने एठी आमे कोन करूचे जेहेतु इनहेरिटेंस पास करूचे तो चाइल्ड क्लास रा ऑब्जेक्ट टा पास कर देले कोन हबो पेरेंट क्लास रा फंक्शनलिटी सब कर लीजिए. ସାର୍ ଆମେ ଏଠି ଚାଇଲ୍ଡ ର ଅବଜେକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କଲେ ସାର୍ ଯଦି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ର ଅବଜେକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରିଥାନ୍ତେ ହେଇଥାନ୍ତା पेरेंट रा ऑब्जेक्ट क्रिएट करले केवल पेरेंट क्लास रा फंक्शनलिटी कॉल हेतंदा चाइल्ड रा कहीं कॉल हेतंदा. ସାର୍ ଯଦି ଆମେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ର କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସହିତ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଏ ଦିଟା କଲ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଚାଇଲ୍ଡ ଟା କଲ୍ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ हाँ ओके सर बुझिली सर थैंक यू
multi level. Okay, so it is a then comes to the multiple inheritance. Multiple inheritance means this one, like here we define class first, class second, then class third. Then second and third is inherit from what? Class third is inherit from second and third first. माने जो क्लास थर्ड अच्छी से फर्स्ट आउ सेकेंड टाको इनहेरिट करूची तो एटा को कहबा हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस. ओके तारा प्रोग्राम में देखो छे तेटे मैं डिफाइन करिवे एटिके डिफरेंट प्रोग्राम अच्छी तो क्लास फर्स्ट रे मु कंस्ट्रक्टर डिफाइन कली then class second okay the class second रे again constructor define हला then class third
देख तो मुझे क्या कॉल कली मुझे कॉल कली क्लास थर्ड को जो कॉल करुच्ची ऑटोमेटिक क्लास थर्ड कौन करिवो कहा को कॉल करिवो ना क्लास टू को कॉल करिवो फर्स्ट जो आम क्लास थर्ड को कॉल करुच्ची से क्लास टू रो कंस्ट्रक्टर कॉल करिवो तो थर्ड सेल्फ INIT तो ये सेकेंड को कॉल करिवो सेकेंड कॉल क्या करिवो ना फर्स्ट को कॉल करिवो जो फर्स्ट रो कंस्ट्रक्टर कॉल होची तो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर अंडर रे अच्छी कौन फर्स्ट देखेला तापरे एटी थर्ड क्या कॉल कला ना सेकेंड को कॉल करची ये देखेला सेकेंड तापरे एट लास्ट एटा मते थर्ड शो कला देखो मल्टीपल इनहेरिटेंस पास करिया को हेले एटी क्लास थर्ड अंडर रे मु लिखली कोन सेकेंड कॉमा फर्स्ट एटा पास कराला सेकेंड कॉमा फर्स्ट दैट मींस माने क्लास 3 फर्स्ट और सेकेंड ए दीटा को से कंटेंट कला बुझिला हेलो प्रियदर्शनी सोमेश अमित बुझी पाइल यस सर हाँ हाँ then as you know that polymorphism that we discuss in the word object orientation concept the polymorphism is a concept which is used to break or it is a combination you can say it is a combination of two words polymorphism is based upon the Greek word one is poly another is morphos poly means many morphos means form many form so we will create a structure that can take or use of many form of object that is called polymorphism it is a combination of two Greek words one is poly another is morphos poly means many morphos means form so now you can say this polymorphism is a ability that one function is reacting in a different way one function is acting in a different way that is called as a polymorphism suppose you are defining a function area if that area function is present in rectangle that area is different when it is present in the circle that area is different so the area is one function when it is used in different classes then it shows the different behavior so that is called as the polymorphism so right polymorphism it is a combination of Gibson heading polymorphism two Greek word one is poly another is morphos means many form
Okay, so now I show you this program. See that here we use a function. One function name is sound. And in dog class, it is another class. It contains a sound function. But when you call dog class function, that functionality is different. Means that sentence is different. For beer, that function is different. So if you notice here we are creating a object of two class. Beer object for beer class or dog object for dog class. And we call the make sound function. In the make sound function, when I pass the beer object, then make sound will call which function? Animal type dot sound. It called sound function. Which animal type you are passing? You are passing a object as beer object. So beer comes to here, beer dot sound. So it is showing you this part. So here again I call the make sound function, passing as a parameter dog object. So dog object is giving a reference to animal type. When you write animal dot sound, then it calls the function of dog. Now when I run, make sound is not defined. Just a minute.
Mr. Wait. सर जो मेक साउंड पूरा से ऊपर नहीं जानते गैप किछि दियंतुनी तो स्पेस किछि रखंतुनी Line number 11. Run कहीं करना. Just a minute. मैं एक ठो आने. Indentation बोलोगे. Okay. तो dear object, beer object. ये रखा ला beer. एटी पास कराला dog object. Then dog. Okay, so दीटा का ऑब्जेक्ट में पास कर ले. गोटे डियर ऑब्जेक्ट में पास करे गोटे डॉग ऑब्जेक्ट में पास कर ले. बुझेला. तो ये जो ऑब्जेक्ट रहला तले मो बियर ऑब्जेक्ट पास करूची एटी मेक साउंड फंक्शन अछि. मेक साउंड फंक्शन रे मो एठे एनिमल टाइप पास करी. एनिमल टाइप डॉट साउंड. तो एठे हमरा इनिशियलाइजेशन को फंक्शन हैला. एठे हमरा रहला मेक साउंड बियर ऑब्जेक्ट. एटी दीटा का ऑब्जेक्ट बनाला. मेक साउंड फंक्शन कॉल कराला. बियर ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास कराला. एटा एठी की गला बियर ऑब्जेक्ट साउंड फंक्शन को कॉल कले एटा मते शो कला. दे डॉग ऑब्जेक्ट एटी बनाई डॉग ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास कराला. डॉग ऑब्जेक्ट एठी गला एटी शो करिवो. बुझला. सोमेश प्रियदर्शनी अमित. Yes, sir. सर जो एग्जांपल फास्ट जो लिखा है क्लास बियर तापर जो पैरामीटर पास करला ऑब्जेक्ट एटा न लिखला हबनी. पैरामीटर ऑब्जेक्ट
yes sir first ରେ ପୁରା first ଲେଖା ହେଇଥିଲା object pass କରାହେଲା ମାନେ parameter ଭିତରେ object ଲେଖା ହେଇଥିଲା तो ଆମେ yes sir ସେ ପୁରା starting class line 1 ଟା ହଁ। ବୁଝିଲା ବୁଝିପାରିଲ ସमेଶ ବୁଝିଲା କଣ ପାଇଁ ଅବଜେକ୍ଟ ନ ରଖିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ ନା sir ବୁଝିହେଲାନି ଏଠି ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟ ହଟଉଛେ ଯେତେବେଳେ ଅବଜେକ୍ଟ ହଟଉଛେ ଆମର କଣ ଦେଖଉଛି ନେମ୍ ଏରର ଶୋ କରୁଛି ଓ ବି ଯଦି ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛେ ଏଟା ନେମ୍ ଏରର ଶୋ କରୁଛି ତ ଅବଜେକ୍ଟ ଇଜ ଏ ପ୍ରି ଡିଫାଇନ୍ ଯେମିତି ସେଲ୍ଫ ରହୁଛି ଏଠି ଅବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫଙ୍କସନ ଟା ଡିଫାଇନ୍ କରିବା ତ ଏଇଟା କଣ ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫଙ୍କସନ ଟା ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛେ ସେଲ୍ଫ कीवर्ड यूज କରୁଛେ yes sir which is a predefined yes sir ତ ସେଟା ଯୋଉ ମଲ୍ଟି ଲେବଲ ସେ ଯୋଉ ମଲ୍ଟି ଲେବଲ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ sir animal ପାଖରେ ତ ଏମିତି ଅବଜେକ୍ଟ ଲେଖିନଥିଲା ପାରାମିଟର ପାସ୍ କରିନଥିଲେ ଆନିମଲ ପାଖରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଠି ଆମେ କଣ ଇନହେରିଟାନ୍ସ ପାସ୍ କରୁଛେ କି ଆମେ ଯୋଉ ଇନହେରିଟାନ୍ସ ପାସ୍ କରୁଥିଲେ ସେଠି ଆମକୁ ଅବଜେକ୍ଟ ବନେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଠି ଆମେ ଇନହେରିଟାନ୍ସ ପାସ୍ କରୁନେ ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିହେଲା ସमेश yes sir सो इनहेरिटेंस जदि तुम पास करूछ से जगह रे आमे पास करबा दरकार नै के आमे चाइल्ड क्लास रा फंक्शनलिटी को तो कॉल करियो एटी विदाउट इनहेरिटेंस रे आमे कंबाइन करूचे सेम फंक्शन टा मल्टीपल जगह रे यूज करा जिवो सेति पयटी हमर ऑब्जेक्ट यूज करा बुझिला okay sir अच्छा एठी देखो कोन आसिला क्लास कैट कैट क्लास रे गोटे कंस्ट्रक्टर रहिला गोटे फंक्शन रहिला इन्फो देन मेक साउंड तो एठी रहिला क्लास डॉग डॉग भीतर भी कंस्ट्रक्टर रहिला से कंस्ट्रक्टर भीतर से मेंबर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कराला नेम इज इक्वल टू नेम एज इक्वल टू एज तो ए दीटा भीतर कोन हला ना मु प्रथमे कैट क्लास रा ऑब्जेक्ट बनैली एज ए कंस्ट्रक्टर किटी एंड 2.5 पास करे ए डॉग क्लास रा ऑब्जेक्ट बनैली और नेम और 4 पास करे जेतले मु कंस्ट्रक्टर कॉल करूची तो कैट और डॉग रा मेंबर वेरिएबल एटी नेम और एज एटी स्टोर हे गला तो हेला परे तापर मु एनिमल इन cat 1 and dog 1 cat 1 dog 1 is the object of animal class तो animal dot make sound तो मु make sound को कॉल करिवि animal 1 ने के अछि cat 1 अछि तो cat 1 रो कंस्ट्रक्टर माने cat रो कंस्ट्रक्टर रे जो वैल्यू अछि सेटा रन ओके I am a cat my name is this and I am age this year तो
ओके प्रथम मेक साउंड कॉल करिवो तापर इंट्रो मेक साउंड रे जरा से कॉल करूची एटा देखिए तापर एटा देखिए बुझ पाइलो प्रियदर्शिनी सोमेश अमित सर Yes, sir. okay so then comes to the abstract class. Abstract class is a incomplete class which contain the abstract method. Abstract method is what? Now it is a incomplete method where the method is only declared but it is implemented in the derived class. So abstract class is what? So I will give you a prototype. ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ବାୱେଲ ଦେବି ସେ ବାୱେଲ ରେ ତୁମେ water take करियो इनटेक करियो किबा तुमे कौन करी खाइबो so it is dependent upon you in which way you have to define. So I have to take only that item that is fitted with this particular vowel. So abstract class is just like that. It is a incomplete method, incomplete class which contain an incomplete method. So if method is incomplete, why you are defining it? So you have to define such a function. That function is used in the child class with a different requirement. So I will give you vowel, then you have to take anything that inside the vowel. So abstract class is just like that. It define a method, and those are the method is using the abstract class. Then that class is bound to implement the giving a functionality to the abstract class method. माने abstract class method रे जो method थिबो जो class टा derive हबो abstract class रे से वो retrieve करियो बुझेला सोमेश यस सर Yes, sir. okay okay so in next class I will show the example of abstract class then I go with the modules modules to start करिए ओके सर okay चलो